But the Indian sporting story was being rewritten by some very unassuming winners. They came from small towns and were not in the limelight. But by the end of the games, wrestlers Alka Tomar, Amita and the sisters Geeta and Babita, gymnast Ashish Kumar, track and field athletes Prajusha, Krishna Punia and the 4x400 women's relay team emerged as the new superstars of the games. Ladies and gentlemen, the crowd watched in astonishment as Geeta pinned down her Australian opponent Emily Benstead with a formidable lead of 11-1. Haryana's Geeta won India's first gold medal in the women's wrestling at the Commonwealth Games. मुझे ही नहीं पूरे देश को जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे उनको सभी को उम्मीद थी, मेडल की नहीं सभी को मेरे से गोल्ड की उम्मीद थी और मुझे खुशी है कि मैं उन लोगों को और अपने आप से भी कि मैं उसको पूरा कर पाई। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं और हमारा गोल्ड आता है, जब हमारे देश का झंडा सबसे ऊपर लगता है और राष्ट्रीय धुन बजती है तो मुझे ही नहीं हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। A medal hope from the very beginning, Geeta comes from Bhiwani, the hotbed of boxing and wrestling talent in India. 22 years old, Arjuna Award winner Alka Tomar was a medal prospective for India. And she lived up to the expectations. In the 59-kilogram category in freestyle wrestling, she defeated Canadian Olympic medalist Tonya Verbeek. In 3 rounds to win the gold medal. गोल्ड तो मेरे कई बार पहले भी आए हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड आया था और उससे पहले कनाडा कप में भी मेरा गोल्ड आया है और मतलब काफ़ी गोल्ड हैं, लेकिन जो इस गोल्ड की अहमियत है वो शायद कभी नहीं हो सकती किसी भी गोल्ड की। मेरे ख्याल से ओलंपिक में भी नहीं हो सकती क्योंकि ओलंपिक लंदन में हो रहे हैं और ये अपनी दिल्ली में हुआ है, अपने देश में हुआ है। Amita won the top spot in the 67-kilogram category at the games. गोल्ड मेडल तो मेरा यही है कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन इससे पहले मेरा एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है। The Indian men's wrestling team led India's campaign at the games, bagging 7 of the 14 goals. With world champion wrestler Sushil Kumar at its helm, the men gave the games some of its most glorious moments. He remained the most feared contestant on the mat. And that is one of the biggest sporting heroes in India right now, Sushil Kumar. बहुत ही अच्छा और वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट तो कॉमनवेल्थ वैसे ही होता है क्योंकि ओलंपिक के बाद सबसे बड़े गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि हमें हमारे देश को कॉमनवेल्थ कराने का मौका मिला और हमें खेलने का मौका मिला। This young champion from Haryana had practiced tirelessly and was ready for his challengers. A role model for the young, Kumar is today one of the country's biggest sports ambassadors. देवियों और सज्जनों, कृपया राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। National champion Ravinder Singh was a key figure of the Indian attack. मैं खरमान गांव से हरियाणा में जो झज्जर ज़िले में पड़ता है और मेरे को रेसलिंग का मेरे पिताजी को और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा शौक था और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 साइड फर्स्ट टाइम किसी को एक पॉइंट भी नहीं दिया लास्ट तक। Unbeaten on the domestic mat for the past 10 years, Singh, a native from Haryana, struck gold in the 60-kilogram Greco-Roman category. Yogeshwer Dutt from Sonipat in Haryana won gold for the country in the 60-kilogram freestyle category. मैं बिल्कुल छोटा सा जब रेसलिंग स्टार्ट की, मैं 8-9 साल का के ने मैंने कुश्ती स्टार्ट कर दी थी। मैंने 13-14 साल से 17 स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कुश्ती थी उस दिन हमारे सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी आए थे और राहुल गांधी जी आए। बहुत खुशी हुई मेरे को कि वो मेरी कुश्ती देखने आए और मैंने गोल्ड जीता और इतनी क्राउड थी कि लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा।
Humble and dedicated, these men turned into fearsome foes on the mat and fought like fearless gladiators. He's 19. I'll stand by for fireworks. What a start, and it was terrific. 2.5 twists. A medal in gymnastics became a reality for this country of 1 billion when 19-year-old Ashish Kumar won India's first ever medal in gymnastics. मैंने 94 में जिम्नास्टिक ज्वाइन की जब मैं 4 साल का था। तो 4 साल में मुझे कुछ पता नहीं चलता था क्या करना है क्या, बस मेरे जो ब्रदर है मुझे लेके जाता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था शुरू में, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के जिम्नास्टिक जाना किसी भी बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा, वो भी 4 साल के बच्चे को। With a near perfect tumbling pass, he wowed the crowds with histrionics one rarely gets to see from an Indian athlete. Before the games began, her only claim to fame was a bronze at the Doha Asian Games. And though traditional roles compel Indian women to settle into their domesticated lives, 28-year-old Krishna Punia, married with a child, had a dream. हरियाणा से हूँ, अग्रोहा गांव से हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। छोटा सा एक कस्बा है। इस दुनिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं था मैंने। कॉलेज में आके थोड़ा शुरू किया, मेरे बेटे का जन्म हुआ। उसके बाद मैं नहीं सोच रही थी कि मुझे और स्पोर्ट्स करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये था कि ये हैमर थ्रोवर रहे हैं, इंटरनेशनल खेला है, नेशनल चैम्पियन रहे हैं, पर इनका एक ख्वाब था कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो ये कर सकती है और मैं इससे करवाऊँ। October 11, 2010 was a special day when this young woman captivated a jam-packed stadium with a discus throw of 61.5 meters. In doing so, she became the country's only second athlete after Milkha Singh to bring home gold in a track and field event in Commonwealth Games 2010. One of the great moments of these games, obviously, with the Indian clean sweep. And atop the medal rostrum is Krishna Punia. India's newly anointed Queen of Track and Field accomplished her dream and ran the victory lap with Harvant Kaur and Seema Antil, her compatriots. मन ही मन में काफ़ी बार जैसे अपने आप के बारे में सोचा कि इंडिया में एथलेटिक्स में वीमेन का कभी भी गोल्ड मेडल नहीं आया था कॉमनवेल्थ गेम में। तो गोल्ड मेडल के लिए सोचती थी, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी हूँ, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। तो जिस दिन ये सब हुआ ना, तो बस पूछो मत कि ऐसे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जिसका मैं जवाब दूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी उस दिन, और उसके साथ ही तिगुनी खुशी होगी जब तीनों ही तिरंगे डिस्कस में ऊपर जा रहे थे। Of the 50 Indian athletes who bid 38 yellow medals, 20 were women. The 4x400 Indian women's relay team will clearly be the highlight of that glory list. The Nigerians with a really big lead here. The Indians are running superbly at the moment. It's the climax the Indians wanted. They've taken the lead here. What a leg by Bamloa. India in the lead on the last leg. Mandeep Kaur is going to set the stadium alight. The Indians are the champions. 52 ईयर के बाद हम लोगों का ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीता है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। In doing so, they became the new superstars of the country. जब मेडल जीते तो हर लोग खड़े होके हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मतलब इतनी इज्जत तो कभी हमें जिंदगी में कभी नहीं मिली। The nation watched their achievement in awe and admiration. That was a performance of heart. It was a performance of guts.
She comes from a most humble background, from one of the country's most low-profile states, Jharkhand. But this 16-year-old wrote an almost Cinderella story with her achievement. मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इसे ही एक इंडियन ऑन के बारे में मुझे बताया कज़न सिस्टर ने, बस उसी को देख के सुन के बस इंटरेस्ट आ गया कि नहीं मुझे भी आर्चरी करना है, आर्चरी में जाना है। With a modest smile on display, Deepika Kumari became India's first woman to win an individual gold in archery. एज ए गर्ल तो बहुत खुशी मिलती है कि उसकी वजह से उसका देश का झंडा सबसे पहले नंबर पे है, तो बस एक बहुत खुशी होती है, दिल को इतना सुकून मिलता है जैसे चलो हम भी कुछ अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। And to the further delight of the fans and the country, the women's archery team also clinched the top spot in the women's team event. When Saina Nehwal came for her final match, India needed that one gold to overtake England for the overall second spot. But 45 minutes into the match, she found herself down a match point, 20-21 in the second set. But like a true champion, Saina fought back. 22-21. The 20-year-old national icon and world number 2 swept all corners of the court with the resolve of a tigress on a prowl, and comfortably defeated her Malaysian opponent in the third and final set to win the gold. This time, the second time I'm asking, and Saina Nehwal of India, relief as much as happiness. India had won the badminton gold after 38 years, and Saina became the only Indian woman to have achieved this feat. I think it's a very big achievement, and I feel really proud to have won this title in India in front of my home crowd, and I'm quite satisfied with my performance in the team event also. An ecstatic nation watched the Indian pile of gold getting heavier, with weightlifters Ravi Katulu and Renu Balachanu standing tallest on the podium. Boxer Suranjoy Singh, fondly called India's Little Tyson. And Manoj Kumar's exploits caught the crowds in frenzy, with India adding 2 more golds to her medal tally. In the red corner, Manoj Kumar from India. It was Somdev Devvarman who became the new poster boy of Indian tennis. Traditional rivals in hockey, India and Pakistan met in a pool match. It's Sandeep. Oh, yes. Under pressure to perform or face the humiliation of ouster, India thrashed Pakistan 7-4 in a must-win match to storm into the semi-finals of the men's hockey. What a contrast. Just a little thumbs up from the coach. Everybody else is going mad in this stadium. In the semi-finals at the Delhi Games, Indians were down 1-3 in the match, with barely 15 minutes from the hooter. But they never gave in.
eventually equaling the English score. The match then followed a penalty shootout. In a lion-hearted performance, India defeated England and marched into the final. The great rivalry in the Indian camp was between two colleagues and contestants, Abhinav BINDRA and Geeta Narang. Abhinav BINDRA had been in the limelight, but Geeta was waiting for his place in the sun. They began the games by jointly winning the gold in the men's 10-meter air rifle. But it was the individual event that saw Geeta clinching the gold, while the Olympic gold winner had to settle for silver. Sport, I mean, there have been a lot of occasions where Abhinav has beaten me, and there have been occasions where I have beaten him before, and ultimately we both are fighting for the glory of the country. Commonwealth Games 2010 was to see Geeta dominate the shooting range. With a mind that was focused, an aim which was unwavering, Geeta scored a world record of 600 out of 600 in the qualification round. 27 years old Hyderabad boy Geeta Narang eventually took home 4 gold medals. It feels absolutely great to be able to perform in front of a home crowd. This opportunity of delegating the Commonwealth Games has been a wonderful way of showcasing our country to the world.